Namaskar. Good evening, viewers. You are watching House Highlights on Sansad TV. I'm your host, Rajiv Kumar. The monsoon session of Parliament came to a close on Friday. In this program, we will look at the highlights of the proceedings of Lok Sabha and Rajya Sabha on the 17th and last day of the session. Let us first take a look at the headlines. Both houses of Parliament adjourned sine die. Total of 21 bills passed by both the houses. Session saw productivity of 45% in Lok Sabha and 63% in Rajya Sabha. No confidence motion against the NDA government defeated after discussion. The Lok Sabha passes the Central Goods and Services Tax Amendment Bill 2023 and Integrated Goods and Services Tax Amendment Bill 2023. Home Minister Amit Shah introduces 3 bills in the lower house. The Rajya Sabha suspends Aam Aadmi Party MP Raghav Chadha for unruly conduct. Suspension period of AAP MP Sanjay Singh also extended. Leader of the House Piyush Goyal moves motion. Suspension till the pending report of Privileges Committee. Both houses of Parliament were adjourned sine die on Friday, bringing an end to the monsoon session that registered a total productivity of 45% in the lower house and 63% in the upper house. The session commenced on July 20th. A total of 17 sittings were held in 23 days. Total number of bills passed by both houses of Parliament during the session is 21. 23 bills were passed by Rajya Sabha. In his valedictory address, Chairman Jagdeep Dhankar expressed his concern over disruption in the House, saying the upper house lost 44 hours and 58 minutes due to disruptions. A total of 44 hours and 58 minutes during the 17 sittings of the House were lost due to avoidable disruptions, adversely impinging on our overall productivity of this session. The people at large are in pain. They have got us elected here. They are sustaining us by their fiscal power. It's a heavy drain on exchequer. Our accountability and transparency has nosedived. Can we allow such a scenario to continue? Honorable members, we have been able to pass few bills during the session that witnessed some lively and animated debate. We could take up questions on a few occasions, but I feel the productivity of the question hour could have been much better. I will make an appeal to media also. It pains me when media carries a news report. Rajya Sabha passes bills in absence of opposition. It is factually wrong. Media is required to be on tenable factual ground. The members chose not to perform their constitutional duty by being present. They walked out not from the House, but from their solemn duty, their constitutional obligations. And therefore, such kind of reporting by media, I appeal to media to be more sensitive to the sentiments of the people at large and properly, fairly report the proceedings of the House. Chairman also praised women members of the panel of vice chairpersons for the smooth conduct of the proceedings of the House. Rajya Sabha also witnessed a positive development while giving fair representation to our dynamic women members to be part of the panel of vice chairmen. I wish to utilize their innate managerial skills for the smooth conduct of the proceedings of the House. And friends, this decision was taken after careful deliberation. And I get a feel that women chairpersons have performed from this chair in a manner which is of the highest standards. When for the first time, P.T. Usha, who got a Padma Award in 80s, sat on this chair, I got messages from all over the globe that she has glorified this position. This gave me the spinal strength to put more honorable
women members of this house in the chair. The first member of parliament from Nagaland, Koinak. Remarkable performance. And the same applies to others. I think they have vindicated the role, made us proud. In a similar vein, the Secretariat, in a laudable move, undertook a progressive initiative to empower its women employees by affording them the opportunity to attend to the significant table duties within hallowed chambers. Right now, you'll see, all four are women. The Rajya Sabha on Friday bid farewell to 5 members, including BJP leader Jugal Singh Lokhandwala, who will retire on August 18th, and recalled their contribution to the House. Out of the 9 retiring members, 4 have been re-elected. 4 members, S. Jayashankar of BJP, and 3 AITC members, Sukhendu Shekhar Ray, Derek O'Brien, and Dola Sen, have been re-elected to the upper house, while the 5 retiring members are Jugal Singh Lokhandwala and Dinesh Chandra Jemal Bhai Anavaidya of the BJP, Sushmita Dev and Shanta Chetri from the AITC, and Pradeep Bhattacharya from Congress. Chairman Jagdeep Dhankar said the House will miss the other 5 members. Honorable members, as you may be aware, 9 of our colleagues, please, 9 of our colleagues, they have been our part. 9 of our colleagues from states of Gujarat and West Bengal, namely Shri Dinesh Chandra Jemal Bhai Anwadia, Shri Jugal Singh Lokhandwala, Shri S. Jayashankar, Shri Derek O'Brien, Susri Dola Sen, Shri P. Bhattacharya, Srimati Shanta Chetri, Shri Sukhendra Shekhar Rai, and Susri Sushmita Dev. They will be retiring on 18th August 2023 on completion of their term of office. 4 of the retiring members, Shri S. Jayashankar, Shri Derek O'Brien, Susri Dola Sen, Shri Sukhendu Shekhar Rai, have been re-elected. Our congratulations them for being re-elected. With their experience, they will bring on the table a greater commitment and direction. We will have their continued contribution of their experience, talent and intellect, and sagacity in the House. The House will be missing other 5 retiring members who have made rich and significant contributions to the proceedings of the House during the course of their tenure. The Leader of the House and the Leader of the Opposition highlighted their contribution. Members congratulated retiring members. जुदाई हो विदाई हो उसमें किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन साथ ही साथ एक सेलिब्रेशन का भी मौका है. हम रिफ्लेक्ट करते हैं अपने कार्यकाल का. अलग अलग माननीय सदस्यों ने, सांसदों ने बहुत सारा योगदान दिया है. कई डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया, कई भाषण दिए, कई प्रश्न ज्वलंत विषय उठाए. अलग अलग रिफ्लेक्शंस देके सदस्य यहाँ से निवृत्त होते हैं. लेकिन मैं समझता हूँ सभी राजनीतिक व्यक्ति हैं और सबको अलग अलग जिम्मेदारियाँ उनकी पार्टी देती है. हमारे यहाँ पे भी लगातार ये एक चर्निंग प्रोसेस रहता है कि व्यक्ति कभी सरकार में आता है, कभी सदन में आता है, कभी पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, और इस प्रकार से व्यक्ति का भी निर्माण होता है और साथ ही साथ देश की सेवा के अन्य अन्य तरीकों से मौका राजनीतिक कार्यकर्ताओं को मिलता है. मैं बधाई देना चाहूँगा सभी माननीय सांसदों को जिन्होंने इतने वर्ष देश की सेवा में सदन में भी योगदान दिया. लेकिन ये जो मेंबर्स रिटायर होते हैं ये थोड़े समय के लिए, लेकिन अब जाकर फिर सामाजिक कार्य करते हैं और बहुत से पढ़े लिखे हैं. कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, कोई बैरिस्टर है, कोई अपने स्पोर्ट्स में एक्सपर्ट्स हैं.
ऐसे सभी लोग यहाँ पर आए हैं और वो उनका बहुत से इसमें यंग लोग भी हैं। तो मैं यही अपेक्षा करता हूँ कि वो समाज की सेवा करें और जिन विचारधारा पे वो विश्वास रखते हैं उस विचारधारा पे चलने की पूरी कोशिश करें। The Rajya Sabha on Friday suspended Aam Aadmi Party MP Raghav Chadha for unruly behavior in the House and extended the suspension of Sanjay Singh after Leader of the House Piyush Goyal moved motions for the same. Leader of the House Piyush Goyal urged the chairman to suspend Raghav Chadha until the Committee of Privileges investigating the case against him submits its report. Honorable Chairman, sir, it is very painful for me to initiate an action against a fellow member of the House. However, it will be an abdication of constitutional responsibility and obligations to shun from such a responsibility as well. In view of the severe misdemeanor, outrageous disregard of rules and trampling of privileges of other honorable members, with utmost constraint, I move the following resolution: that the Council disapproves gross violation of rules, defiant attitude, mischievous and contemptuous conduct of Honorable Member Shri Raghav Chadha, resulting in lowering the dignity of the Council and blatant disregard to the framework of Code of Conduct for members of Rajya Sabha as prescribed by the Committee on Ethics, and thus approve suspension of Shri Raghav Chadha from the Council till the Committee of Privileges submits its findings on cases of breach of privilege pending against him. Taking a holistic view on the gravity of his misdemeanor, violation of rules, defiant attitude and inappropriate conduct, I find it expedient invoking Rule 266, read with Rule 256, and suspend Sri Raghav Chadha, member from the service of the Council, till the Council has the benefit of the report by the Committee of Privileges. The House also extended the suspension of AAP MP Sanjay Singh till the recommendations of the Privileges Committee. Sanjay Singh was suspended from the upper house for the remainder of the monsoon session on July 24th. Therefore, with your permission, sir, I would like to, for the consideration of this august House, move the motion that the Council disapproves the repeated violation of rules, directives of the Chair and unruly conduct of Honorable Member Shri Sanjay Singh, as the same are not in conformity with the rules to be observed by the members of the Council, as the same lowers the dignity of the Council, and as the same are in violation of the framework of Code of Conduct for members of Rajya Sabha as prescribed by the Committee on Ethics, and thus approve the continuation of suspension of Shri Sanjay Singh till the Committee of Privileges submits its findings on cases of breach of privilege pending against him. Taking a conspicuous view of his continued misconduct, violation of directions and blatant disregard of the rules of the House, I find it expedient to refer the matter as indicated earlier to the Committee of Privileges. Further, I invoke Rule 266, read with Rule 256, that suspension order dated 24 July 2023 in respect of Shri Sanjay Singh may continue beyond the current session till the Council has the benefit of recommendation by the Committee of Privileges. The Upper House on Friday returned the Central Goods and Services Tax Amendment Bill 2023 and the Integrated Goods and Services Tax Amendment Bill 2023 to the Lok Sabha. Finance Minister Namrata Sitharaman moved motion to consider and return the Central Goods and Services Tax Amendment Bill 2023 and the Integrated Goods and Services Tax Amendment Bill 2023. Earlier, when the House met this morning, Leader of the House Piyush Goyal on Friday congratulated Chairman Jagdeep Dhankar for completing 1 year as the Vice President of India.
On behalf of the entire House, I would like to compliment you on completing 1 year as the Vice President of India and for the astute leadership that you have given to our House, to Parliament. You have brought dignity and grace to the second highest constitutional position in this country and truly helped bring about a lot of improvement, a lot of change with your legal acumen. On the last day of the monsoon session, another special moment was captured when Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankar posed for a picture with the women members of the panel of vice chairpersons. In a historic move, Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankar had reconstituted the panel of vice chairpersons with 50% women parliamentarians. All 4 women parliamentarians nominated are first-time members. Time for a very short break in the bulletin. News from the lower house on the other side. Welcome back. On the last day of the monsoon session, Home Minister Amit Shah introduced 3 bills in the Lok Sabha. The Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita Bill 2023, the Bharatiya Nyay Sanhita Bill 2023 and the Bharatiya Sakshi Bill 2023 were introduced. The bill aimed at reforming Indian Penal Code, Criminal Procedure Code and the Indian Evidence Act. माननीय अध्यक्ष जी, इंडियन पिनल कोड 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 अब एस्टैब्लिश होगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रस्तावित होगी और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 प्रस्तावित होगा। ये तीनों कानूनों को रिप्लेस कर इनकी जगह जो 3 नए कानून बनेंगे उनकी आत्मा होगी भारत के नागरिकों को संविधान प्रदत्त सारे अधिकार जो मिले हैं इसकी सुरक्षा। मानवी की हत्या से या महिला के साथ दुराचार से बड़ा कोई कानून अपराध नहीं हो सकता, तो इसको 302 नंबर पर स्थान दिया गया। इसके पहले क्या था? राजद्रोह था। इसके पहले क्या था? खजाने की लूट थी। इसके पहले क्या था? शासन के अधिकारी पर हमला था। ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच को हम बदल रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर इसमें आएगा महिलाओं और बालकों के साथ अपराध। दूसरा चैप्टर आएगा मानव वध और मानव शरीर के साथ जो अपराध होते हैं उसका आएगा। तो हमने शासन की जगह नागरिक को केंद्र में लाने का एक बहुत बड़ा सैद्धांतिक निर्णय कर हम ये कानून लेकर आए हैं। सभी राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, सभी विधायकों, सभी सांसद और सभी न्यायाधीशों से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से और लॉ यूनिवर्सिटी से आए हुए सारे प्रस्तावों को, सारे सुझावों को कंसीडर कर लाइन बाय लाइन इसको पढ़कर ये विधेयक लेकर मैं आज सदन के सामने उपस्थित हुआ हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, 4 साल तक इस पर गहन विचार विमर्श हुआ है। मैं जिसमें उपस्थित हूँ ऐसी 158 बैठकें हमने रिकॉर्ड पर करी है। माननीय अध्यक्ष जी, बाय लाइन इसको हमने पढ़ा है। मान्यवर, मैं गुजरात का कानून मंत्री भी रहा हूँ, विधि मंत्री भी रहा हूँ। कई लोगों ने मुझे कहा था कि साहब पनिशमेंट की कोई जरूरत ही नहीं। मैंने बोला क्यों? कि कोर्ट में जाना इटसेल्फ पनिशमेंट है। इस प्रकार की मानसिकता लोगों के दिमाग में करके हमने इसीलिए आधुनिक से आधुनिक तकनीक को
इसके अंदर समाहित करने का निर्णय किया है माननीय अध्यक्ष जी। दस्तावेजों की परिभाषा का विस्तार कर इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड, ईमेल, सर्वर लॉन्ग्स, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप, एसएमएस, वेबसाइट, लोकेशनल साक्ष्य, डिवाइस पर उपलब्ध मेल और मैसेजेस, ये सभी को कानूनी वैधता इस देता है, जिससे अदालतों के अंदर जो कागजों के ढेर लगते हैं, अंबार लगते हैं, वो समाप्त हो जाएंगे। अब हमने सर्च और जब्ती में वीडियोग्राफी को कंपलसरी करा है, जो अब वीडियोग्राफी केस का हिस्सा होगी। पुलिस द्वारा ऐसी रिकॉर्डिंग के बिना कोई भी चालान, चार्जशीट रखा जाएगा, वो वैध नहीं होगा। हमने Finance Minister Namrata Sitharaman on Friday introduced two bills related to GST, the Central Goods and Services Tax Amendment Bill 2023 and the Integrated Goods and Services Tax Amendment Bill 2023 were later also passed without any discussion. I rise to move for leave to introduce a bill further to amend the Central Goods and Services Tax Act 2017. श्रीमती निर्मला सीतारमन जी। So I rise to move for leave to introduce a bill further to amend the Integrated Goods and Services Tax Act 2017. मान्य सदस्यगण, यदि सभा की सहमति हो तो केंद्रीय माल और सेवा संशोधन विधेयक 2023 तथा एकीकृत माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 पर एक साथ विचार किया जाए। सभा की सहमति हो तो इन विधेयकों को बिना बहस की सभा के निर्णय के लिए रखा दिया जाए। Sir, I rise to move that the bill to amend the Central Goods and Services Tax Act 2017 be taken into consideration. And also together with it, as you have mentioned, Honorable Speaker, I rise to move that the bill to amend the Integrated Goods and Services Tax Act 2017 be taken into consideration. मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। Sir, I move that the bill be passed. प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव करता हुआ विधेयक पारित हुआ। The question hour could not be conducted as opposition members continued disrupting proceedings. Professor Saugata Ray of AITC had a question for the External Affairs Ministry related to new UK visa rules. He asked, will the Minister of External Affairs be pleased to state whether the government has taken note that United Kingdom has changed its visa rules for students from abroad? If so, the details thereof. Minister of External Affairs Dr. Subramaniam Jayashankar, in his written reply, has said, yes, as per the UK government's new visa rules from 17th July 2023, international students will not be able to switch out of the student route into work routes before their studies have been completed. Also, from 1st of January 2024, international students will not be able to bring dependents unless they are on postgraduate courses, currently designated as research programs. At the end of the session, Lok Sabha Speaker mentioned about the no confidence motion. He also mentioned that 20 bills were introduced and 22 bills were passed by the lower house during the monsoon session. The productivity of the Lok Sabha, however, remained only 45% during the session. After mentioning the productivity, the Lok Sabha was adjourned sine die. माननीय सदस्यगण, हम 17वीं लोकसभा के 12वें सत्र की समाप्ति की ओर आ गए हैं। ये सत्र 20 जुलाई 2023 को आरंभ हुआ था। इस सत्र में हमने 17 बैठकें की, जो लगभग 44 घंटे और 15 मिनट तक चली। सत्र के दौरान श्री गौरव गोगोई द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया, जिस पर 8/8/2023, 9/8/2023 और 10/8/2023 को चर्चा हुई। इस पर 19 घंटे 59 मिनट तक चर्चा हुई।
चर्चा में कुल 60 सदस्यों ने भाग लिया। प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। इस सत्र के दौरान 20 सरकारी विधेयक पूर्व स्थापित किए गए तथा 22 विधेयक पारित हुए। पारित किए गए कुछ महत्वपूर्ण विधेयक हैं: बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2023, डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक 2023, राष्ट्रीय परिचर्चा और प्रसूति विद्या आयोग विधेयक 2023, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक 2023, जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2023, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023, अंतर सेवा संगठन कमान नियंत्रण अनुशासन विधेयक 2023। सत्र के दौरान 50 तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए। शेष तारांकित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे गए। दिनांक 9 अगस्त 2023 को सभी 20 तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए। नियम 377 के अधीन 369 मामले लिए गए। लोकसभा की विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों ने सभा में 65 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए। निर्देश 3 के अधीन 45 वक्तव्य, सरकारी कार्य में संसदीय कार्य मंत्री द्वारा 3 वक्तव्य, नियम 372 के अधीन एक मोटो स्टेटमेंट तथा उत्तर में शुद्धि करने वाला 1 वक्तव्य सहित कुछ 50 वक्तव्य दिए गए। सत्र के दौरान कुल 1209 पत्रों को सभा पटल पर रखा गया। लोकसभा के इस सत्र की कार्य उत्पादकता 45% रही। सत्र के दौरान गैर सरकारी सदस्य कार्य के संबंध में शुक्रवार 4 अगस्त 2023 को गैर सरकारी सदस्यों द्वारा विभिन्न विषयों से संबंधित कुल 134 विधेयक पूर्व स्थापित किए गए। माननीय सदस्यगण, 31 जुलाई 2023 को सभा द्वारा मलावी गणराज्य की नेशनल असेंबली की अध्यक्ष महामहिम कैथरीन गोटानी हारा के नेतृत्व में भारत की यात्रा पर आए मालवी के एक शिष्टमंडल का हार्दिक स्वागत किया गया। माननीय सदस्यगण, मैं सभा की कार्रवाई को पूरा करने में सभापति तालिका में शामिल अपने माननीय साथियों तथा उनके योगदान के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री जी तथा विभिन्न दलों के नेताओं और मान्य सदस्यों के प्रति उनके सहयोग के लिए अत्यधिक आभारी हूं। मैं आप सभी की ओर से प्रेस और मीडिया के मित्रों का भी धन्यवाद करता हूं। इस अवसर पर मैं सभा को प्रदान की गई समर्पित और त्वरित सेवा के लिए लोकसभा सचिवालय के महासचिव और अधिकारी तथा कर्मचारियों की सराहना करता हूं। मैं सभा की कार्रवाई के संचालन में संबद्ध एजेंसियों, उनके द्वारा प्रदान की सहायता के लिए धन्यवाद देता हूं। सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। With this, we have come to the end of the House highlights for this session. We will be back with the program on the first day of the winter session. In the meantime, keep watching Sansad TV. Good night.